start? Yes. Okay. Now we will introduce a new concept, OSPF over Ethernet. Your Ethernet segment is also called as broadcast multi-access. Broadcast multi-access network, BMA. You can write it down. This is BMA network. Broadcast multi-access. Now, what is the property of a BMA network? Let's say router 1 generated one packet, only one packet. This is on your Ethernet segment. Now, router 1 will send this packet to router number 2. The same packet will be sent to router number 3. Same packet will be sent to router number 4. Now, router 2 has received a packet. Router 2 has received this packet. It will further send this packet to router number 3. Further send the packet to router number 4. Now, router 3 has received 2 packets. It will again send the same packet to router number 4. 2 packets to router number 4. 1 packet to router number 2 because it has received 1 packet from router number 2 and 1 packet to router number 3. Sorry, router number 1. Same is the case with router number 4. ये भी सब अपने पैकेट्स को सेंड करेगा on to router number 3, router number 3, 1 and 2. So don't you think this created a chaos in the network? 100% chance है कि आपका नेटवर्क इसमें चोक हो जाएगा. एक पैकेट ने ये हाल कर दिया, सोचो हजारों पैकेट जनरेट करेगा. If we talk about routing protocol, वो तो हर 10 सेकंड बाद अपना hello पैकेट सेंड करेगा. So don't you think it will be a problem? To solve, this is not the property of the OSPF, this is the property of your broadcast multi-access networks. एक पैकेट ने पूरे नेटवर्क में कितना chaos generate किया. So how to overcome this? OSPF, in OSPF, the concept of DR and BDR came into existence. DR and your BDR. DR is your designated router. BDR is your backup designated router. Designated router, backup designated router, and the remaining routers will be drawers, BR. BR, BDR, and your DR others. This is your Ethernet segment. We are running OSPF here between the routers. The concept of DR, BDR, and DR. So let's say my router number 1 become the DR. This is the DR. Router number 2 will be my BDR. This is just a scenario, just for your understanding. I'll show you. Basically, forwarded to R2. No. This is something different. Flooding OPH. One packet was flooded to everyone. इसको ओवरकम करने के लिए ईथरनेट के केस में इन योर ईथरनेट सेगमेंट आपका एक पैकेट आपके हर एक राउटर के पास पहुंचेगा.
अब राउटर 3 ने पैकेट को उसको एक मिला है, now it will send it further to route number 4. Route number 4 will send it to route number 2. This is just like a broadcast, सभी को सेंड करना है. There's no benefit. ये तो नेटवर्क जो कर रहा है, इसी को इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए we came up with a solution of DR and BDR. All right. So let's move to PPT. I said, as of now, treat your router number 1 as your DR, router number 2 as your BDR. In the scenario, router number 1, let's say router number 1 सबसे पहले कब आया? Let's say you went to some jungle. आप अपने आप को जाकर वहां का किंग घोषित कर देते हैं. You say that I am the king for this particular forest. Alright. Please don't come into the jungly mood right now. Okay. This is just an example. कि आप पहली बार एक जंगल में गए, you found that there is no king present there. आप उस forest का अपने आप को कहते हैं I am the king. Now once you are already having one king, जो next आएगा, he'll say okay, I'll be the next to the king. Similarly, in the case with the DR, he came up in the network first. He said, yeah, okay, I am the king, means I am the DR. Router 2 said, okay, I came second, so I'll become backup designated router. So these are the two remaining fellows. They say, okay, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. अगर already king और backup king available है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. We'll accept them as the king and the backup king. So in the case of router, it will be DR and the BDR. So the remaining two will become DR others. Okay. So instead of sending the update, let's say router 3 wants to send some packet to router number 4. They will be the neighbors, but they will not be exchanging the databases with each other. Router 3 will send the packet to the DR. और किस फ्रीक्वेंसी पे सेंड करेगा, सॉरी किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड करेगा, एट द मल्टीकास्ट एड्रेस ऑफ 224.0.0. someone look at that, क्या लिखा, 5 or 6? 6. Dear others, multicast updates to address 224.0.0.6. इसने सेंड किया एट 224.0.0.6 पे इसने एक पैकेट मल्टीकास्ट किया आपके राउटर नंबर 1 को, which is your DR. Now it's the duty of the DR to send the packet to the R4. Actually, R3 will send the packet to DR as well as to the BDR at the same multicast address, which is your 224.0.0.6. Now it's the duty of DR to send the packet back to route number 4 at the multicast address of 224.0.0.5. So उस प्रॉब्लम से हम थोड़ा ओवरकम हो रहे हैं. और आंट भी वो जो chaos नेटवर्क में हुआ था, वो उस प्रॉब्लम से हम ओवरकम हो रहे हैं. इतना क्लियर है अभी तक? I told you that it uses two multicast addresses, 224.0.0.6 and 224.0.0.5. Now, if the DR is if the DR other is sending the update to your DR and your BDR, it will be sent at multicast address of 224.0.0.6, and the DR and the BDR will further send it to DR others at the multicast address of 224.0.0.5. इतना क्लियर है? अब मैं कहता हूँ I don't want this route number 1 to become the DR. उस केस के लिए क्या करें? It is always recommended to hard code, and this is a core interface property. Let's say router number 1 is DR for this particular LAN segment, but it might not be the DR for this particular LAN segment. इस केस में ये DR हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग राउटर्स अवेलेबल हैं. It might be a DR for this particular interface. This is a per interface property.
इस इंटरफेस के लिए तो ये डीआर हो सकता है, बट इस इंटरफेस के लिए डीआर है या नहीं, ये डीसी। ओके, सो नाउ हु विल बिकम द डीआर एंड हु विल बिकम द बीडीआर? अगर तो टोपोलॉजी में सबसे पहले जो राउटर हब आया वो अपने आप को डीआर मान ले। इनकी डीआर और बीडीआर की इलेक्शन होती है, जैसे अभी हमने मोदी जी को दिखाया इलेक्शन हुई। ऐसा तो नहीं था कि मोदी जी ने मनमोहन जी को उठा के सीधा कहा कि नाउ आई एम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसा तो नहीं हुआ। इलेक्शंस का वेट किया उन्होंने, इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीते, उसके बाद ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। सीधा तो नहीं कहा मनमोहन सर आप चलिए मैं आता हूं, और ऐसा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इलेक्शन आर मैंडेटरी। Okay, next slide please. Okay, election of DR and BDR. When OSPF router becomes active and discover its neighbor, it checks for the DR and BDR. Let's say एक router आपके नेटवर्क में आप आया, he will look for the DR and BDR. अगर तो उसको DR और BDR available होगा, it will consider himself as a DR. अगर देखा कि I am the first one on the network, let me declare myself as the DR. एक्चुअली पहले वो बीडीआर बनेगा। बीडीआर देखिए, अगर कोई बीडीआर नहीं है तो बीडीआर अपने आप को कन्वर्ट करके डीआर बनाता है। अब नाउ वेरी बिग पॉइंट कि कौन बनेगा। आई सेड कि हम हार्डकोड करना चाहिए, उसे मैन्युअली बताना डेट यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर और यू बिकम द डीआर। उसके लिए हम चेक करते हैं राउटर्स की प्रायोरिटी। क्या चेक करते हैं? ओएसपीएफ प्रायोरिटी बेसिस। By default, priority of every router, OSPF enabled router is 1. कितनी होती है? So again there is a confusion. सभी की priority 1 है, सभी कह रहे हैं okay I am eligible and I am a PM material, means I am a DR material. Elect me as the DR, but it is not possible. Priority को preference दी जाती है, जिसकी priority ज़्यादा, he will become the DR. प्रायोरिटी की वैल्यू होती है 0 to 255। प्रायोरिटी की जो वैल्यू होती है that is 0 to 255. If some router is having the priority of 0, means he is not eligible for the elections. He cannot take part in the elections. By default सबकी प्रायोरिटी 1 है। अगर मैं सबकी प्रायोरिटी को 0 कर देता हूँ, सिर्फ इसकी प्रायोरिटी को 1 रहने देता हूँ, he will become my DR. अगर प्रायोरिटी सेम है, सबकी प्रायोरिटी 1 है, उस केस में योर राउटर आईडी को देखा जाता है। One who is having the highest router ID, he will become the DR. जैसे R1 के पीछे आपका 1.1.1.1 है, यहाँ पे 2.2.2.2 है, इसका राउटर आईडी। यहाँ पे 3.3.3.3 है, यहाँ पे 4.4.4.4। So in this scenario, who will become your DR? 4 will become your DR because the priority of your, the router ID of your R4 is higher as compared to your route number 2, route number 1, and your route number 3. And who will become the DR? BDR? Route number 3. Because he is having next higher priority, next higher outright. कितना क्लियर हुआ? OSPF और इतने पहले इतने BM में क्लियर हुआ, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उससे ओवरकम करने के लिए DR और BDR को हमने देखा। If we are using the DR, he will be sending the updates at a multicast address of 224.0.0.5. DR others will be sending the packets or updates to DR or BDR at a multicast address of 224.0.0.6. DR BDR elect कैसे होते हैं? Highest priority check की जाती है। Priority by default is 1 for every OSPF enabled router. Okay, priority is same. उसके लिए router ID will break the tie. tie हो गया ना? सबकी priority 1 है। There is a tie. उस केस में राउटर आईडी देखी जाएगी, जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी he will become your DR.
Is the concept clear? Clear or all clear? All clear के बाद backbenches.com. Yes, sir, it's clear, sir. Is it clear? Okay. Yes, it's clear. Thank you. Okay. And what about the other remote centers? GNIT, GNIT Mulana. Yesterday you were complaining that you were having few doubts. Kindly tell me now. GNIT. So, Tell me, sir. it's clear. Okay. Okay, thank you. Now we move on to the configuration part. सर अभी configuration पे आएंगे practically होंगे. We want to do it yourself. पहले देख लीजिए होता कैसे. Okay. How to configure your OSPF? These are the steps. Please note it down. So इसका रहने. ये मैंने नेक्स्ट टॉपिक इसके ओपन किया. उस पे साफ कर. फैमिली के लिए भी मैं नेक्स्ट The last time हुआ था वो जो आप कह रहे थे was very fast. Okay, please note down the steps. All the remote centers you are requested to note down these steps. How to configure the OSPF. Router in the global configuration mode will write router OSPF. Its process ID. Process ID is nothing but the number between 1 to 65,525. Next, you have to advertise the network along with the wildcard mask and the area ID. Okay, now what is wildcard mask? कल नहीं सुना किसी ने wildcard mask? Subnet mask क्या होता है? कल जो हम कर रहे थे writing 10.1.10.0 what will be the mask if it is less than 4 what will be the mask will be 255.255.255
255.0. Now, what does this 255 and this 255 mean? Come on, please. What this 255 means? Means match this n, match this 1, and match this n. They should be the exact match. This is also called as concept of longest match. Okay. अगर यहाँ पे 10.1.0.0 है /24 है तो इसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ 255.255.0.0 or what else I can do is 10.0.0.0 255.0.0.0 alright only this 10 should be matched rest I don't care only first octet should be matched with this rest we don't care this was your subnet mask wildcard mask is opposite of your subnet mask so in this case what will be your wildcard mask it will be 0.0.0.255 where 0 means match 255 means I don't care this is inverse of your subnet mask इस केस में क्या होगा 0.0.255.255 0 means match only 10 and 1 rest we don't care so similarly what will be the wildcard mask for this one it will be 0.1 here inverse of wildcard or subnet mask I'll show you. Shall we proceed to the configuration? Wildcard mask का basic idea हो गया. The next section है which is your access control list उसमें भी आपका wildcard mask use होगा. So at that time आपको थोड़ा और clear हो जाएगा. Okay, I told you about the priority. And I also told you that your priority is your core interface property. Can you see? Config if जब आप इंटरफेस का नंबर लिखते हैं इंटरफेस का नाम लिखते हैं तभी config if में जाता है so IP OSPF priority इस तरह से आप priority सेट करते हैं now verifying OSPF what the commands will be using show commands show IP protocols to see if there any protocol is running or not show IP OSPF neighbors to see whom I am neighbor with database interface and IP route to see the routing table which will be calculated after running your digester SPF algorithm okay okay come back to your task can you see I have taken 4 routers here this is your point to point link this is your Ethernet segment we will be running OSPF over Ethernet can you see this switch here okay so what's our task configure OSPF on all routers put them into area 0 इन सभी चारों राउटर्स को हमें कॉन्फ़िगर करना है and we want to put them into area 0 so let's do it PPT की जानते कैसे आएगी
स्टॉप करनी पड़ेगी तो कभी यहीं पे ओपन कर लेते हैं यही टैब से वोल्टेज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से हो गया तो कंट्रोल पॉइंट Okay, is the task visible to everyone at the back? Okay, let's name it as OSPF. Remote centers, is it visible to you? Yes, sir, it's visible. Okay. So let's draw a topology first. It says route number 1 is here, router 2 is here, 3 is here, and 4 is somewhere. 3 are here. I will take one Ethernet switch here. We will take another router, which is your router number 4 here. GNS तो कल सबको clear हो गया ना? Some of you were asking me how to put the images. Edit पे click कीजिए. यहाँ वाले थोड़ा wait कर लें. Edit पे click करेंगे. RUS images and hypervisors हो गए हो. इस पे click कीजिए. जो आपको images हमने दी थी, I guess all the remote centers are having the images. If they are not having, they can download it from the FTP server. Image file पे click करेंगे यहाँ पर. इस तरह की कुछ. This is an image file. Can you see image? This is also an image file. इस पर डबल क्लिक करेंगे. ये यहाँ पर आ जाएगी. जैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट हो गई, नीचे से आप यू हैव टू डू सेव. That's it. Where? No. There's no point doing it. There's no point doing it. Okay. Just show me. Okay. Now, I want to take Ethernet. Let me take fast Ethernet here. Let me connect it with this router for this switch. Here. And as per the topology, router number 1 is connected to your router number 4 with help of a serial link. Okay? Okay, we are having one loop back here. This is my loop back behind router number 1. Similarly, I have loop back behind router number 2. Okay, if you want to see the interfaces, click here. It will show you the interfaces. Okay, can you see? If you want to see the interfaces, click here. It will show you the show interface labels. The time I click here, is it fine now? I clicked here.
जैसे इस पे क्लिक किया वहां से हट गया, दोबारा करनी होगी. ओके, let me see. This is 10.1.14.0. 10.1.14.0/20. This is dot 1. This is dot 4, means this interface is having IP address of 10.1.14.1 and this interface is having 10.1.14.4. Similarly with route number 2, this is dot 2, this is dot 3. And this is 10.1.123 network. 10.1.123.0/24. So topology सबको clear है अभी? Anyone having any doubt in understanding this topology? What we have to do is configure OSPF on all routers, put them into area 0. First of all, we want to configure all the routers और उन सबको हमें area 0 में लेकर. Okay, so let's start these routers one by one. Okay, एक काम करते हैं, इनको भी स्टॉप कर, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाऊं. फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं ये. पहले मैं इसको ऑन करता हूँ, स्टार्ट, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ. ऑलराइट, इसका कंसोल लेना है, या तो हम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके कंसोल ले सकते हैं इसका, और एल्स आई कैन डबल क्लिक ले. क्लियर? इसका थोड़ा फॉन्ट में आपके लिए इंक्रीज कर दूँ. Is it visible? यहाँ पे तो क्लियर बड़ा हो गया. Okay, same thing we'll do on router number 4. Clear? अभी थोड़ा बड़ा हो गया. Any problem in reading this at the back? Okay. First of all, what is the first command? Enable. But enable में जाने की जरूरत नहीं because it is already in the privilege exec mode. Can you see this hash? Can you see? What is the next command? Configure. Come on, you tell me. You have done this yesterday. Okay. No IP. डोमेन लुकअप. कई बार क्या होता है, आप कुछ रॉन्ग टाइप करते हैं तो उसे वो ट्रांसलेट करने के लिए लग जाता है. तो आई सेड डोंट लुक इट इनटू योर डोमेन. नो आईपी, डोमेन लुकअप. नेक्स्ट इज लाइन कंसोल 0 लॉगिंग सिंक्रोनस. कई बार क्या होता है, जैसे ही कोई आपका लिंक अप आता है तो आपको इंस्टेड ऑफ यू गेटिंग द नेक्स्ट लाइन, वो आपको वहीं पे लिखना शुरू कर देगा. So sometimes this is the problem. So the command is line console 0 logging synchronous, means shift me to the next line, and I hit enter. Okay, what is the command to see the interfaces available on the router? Show IP interface view. To see the interfaces while sitting in the global configuration mode, you have to say do
do show IP interface brief. Yeah. क्या दिखा रहा है? फास्ट इथरनेट है, IP address is unassigned, method is unset, status is administratively down. When will the status come up? Once you do the no shut. Remember or not? Okay. So let me have a look. Here I am having 10.1.14.0. Means this is 14.1. And this interface is also .1. Because this is associated with router number 1. So just for the convenience, जितने router जैसे R1 है तो उसके .1 लेंगे, R2 है तो .2 लेंगे, R3 है तो .3 लेंगे. Okay. Now let me create a loopback here. What is the command for that? Interface. You can configure this number of loopbacks. Please, I was very poor in maths. Count कर लो. किसी का मैथ अच्छा काउंट कर सकता है कितना मिलियन पे जा रही है. Okay. But इतने loopbacks को actual app configure नहीं करते. Because your router will be running short of the memory. Alright. So let me take loopback number 1. Let me assign an IP address. IP address 1.1.1.1 255.255.255.0. Okay, a bit late there. 1.1.1.1 255.255.0. Enter. No need to no shut. Okay. Now if I again say do show IP interface brief, can you see the loopback here? Earlier this loopback was not present. And it is assigned the IP address of 1.1.1.1. उसके बाद क्या कह रहा है? Status is up, protocol is also. Method is manual. Manually check किया. Next we move on to interface fs0/0. This interface over here. What will be the IP assigned to this interface? IP address 10.1.14.1. Am I right? 255.255.255.0. Next command is, what will be the next command? No shutdown. Yes, perfect. Okay. Do show IP interface brief. जैसे ही मैंने किया, line protocol or interface serial this change state to up. Up हो गया. अगर आप इंटरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो yes, no shut is very important. नहीं हर एक के लिए important नहीं है. If you want to run any show command, let's see show IP interface brief. If I'm doing it from some other interface, this is not privileged exec mode. This will show you an error. This command actually runs here. Show IP interface brief. ये यहाँ पे वर्क करती है. कोई से कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल या कहीं और से जाने के लिए what I'm saying do लगा दो. Do show IP interface brief. It will work. Clear? Okay. I have another interface here which is F0/0. IP address is 10.1.123.1 255.255.255.0.
All agree on this? 10.1.123.0. This is 10.1.123.1. All right. No shutdown. Okay. State change to hub. Let's go to router number 4. I'll go a bit fast here. Line console 0. Logging synchronous. Okay, interface to be configured here is IP address 4.4.4.4, 255.255.255.0, and interface IP is S0/0, which will be your IP address 10.1.14.4, 255.255.255.0. इतना समझने में किसी को दिक्कत अभी तक? This is just the initial configuration which we are doing. Enter. No shutdown. Do show IP interface. Read. This is assigned now. Can you see? अभी तक मैंने कोई भी प्रोटोकॉल रन नहीं किया इसमें. If you want to see the protocols which are running, show IP protocols. When I will hit enter, it will show me nothing because I haven't configured any dynamic routing protocol yet. Blank. It's blank. Configure terminal. Now what I want to do, I want to run OSPF here. Alright? So the command is router OSPF, hit a question mark. It will ask for the process ID. Process ID, as I told you, it will be from 1 to 65,535. Let me choose the process ID as 1. Now hit enter. Now I want to define the networks here. I want to advertise this 10 network and I want to advertise this 4 network to router number 1 because right now only router number 1 is up. Alright. So the command is network. जिसमें भी ऐसी करते थे नेटवर्क लिखते थे और आईपी का जो भी नेटवर्क होता था उसको हम लिखते थे. बट इसमें आपको वाइल्ड कार्ड मास्क भी स्पेसिफाई करना है एंड यू आल्सो हैव टू स्पेसिफाई फॉर व्हिच एरिया यू आर कॉन्फ़िगरिंग दिस. ओके, लेट इट बी 10.1.14.0. व्हाट विल बी द वाइल्ड हिट क्वेश्चन मार्क. इट इज आस्किंग फॉर OSPF wildcard bills. It will be 0.0.0.255. Match these 3 octets. This one I don't care. Okay. Put a question mark. It will ask for area. Set the OSPF area ID. According to our topology, it says it should be in the area 0. And say area 0, and I have to hit enter. Is it tough or simple? It is very simple. Now next, R4 के पास और कौन सा नेटवर्क है? It is having this 4 network. 4 network is also present here. I also want to advertise this 4 network. So network 4.4.4.0, 0.0.0.255, area 0. Enter. Done. OSPF is done. Very simple. Concepts are huge, but OSPF in configuration is very simple. Now let me go to route number 1. यहाँ पर मैं कमांड डिबग करूंगा. डिबग IP पैकेट्स
एडजेसेंसी को डिबग कीजिए. Okay, now let me go to the configure terminal, router, OSPF, process ID was 1, hit enter, put the network 10.1.14.0, 0.0.0.255, area 0, hit enter. Oh. I will explain everything to you. ये जो हो रहा है आपके साथ 1.1.1.0, 0.0.0.255, area 0, enter. Do you all means undebug all. Okay, now let's see here. जैसे ही मैंने इसके ऊपर कहा कि मेरे को सारे पैकेट्स को डिबग करना है, मैंने आपको कहा ये लोडिंग से फुल पे जाता है कि नहीं जाता. स्टेट्स होती है इसकी. लुक एट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, IP source is 10.1.14.1, sending to a multicast address of destination D is for destination 224.0.0.5. इनकी हेलोज एक्सचेंज हुई, they entered into a two-way communication. किसने गए? two-way communication. इन्होंने भी कुछ सेंड किया, इस पे क्या किया, एक स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसने कहा नेगोशिएशन डन, वी आर नॉट स्लेव, वी आर अ स्लेव, सॉरी, दिस राउटर नंबर 1 इज स्लेव. मास्टर स्लेव रिलेशनशिप फॉर्म होती है आपकी. he said we are the slave. मल्टीकास्ट पे सेंड हुआ, रिसीव DBDs, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर्स, पैकेट्स, ठीक है. उसके बाद एक्सचेंज स्टार्ट हो गया. Exchange done. I told you I didn't mention it in the PPT. Exchange done. LSA send हुए. This is LSREQ, means link state request. LSREQ, can you see? This is link state request. ये send हुआ, उसके बाद synchronize with 4.4.4. सारे सिंक्रोनाइज हो गए. एज सून एज जो सिंक्रोनाइज हुए, स्टेट चेंज टू फुल, और इसने नीचे मैसेज दिया यहाँ पे, फ्रॉम लोडिंग टू फुल, लोडिंग डन. सिंक्रोनाइज हो गया, उसके साथ स्टेट फुल हो गई. फुल होते ही यहाँ पे एक मैसेज आ गया, लोडिंग टू फुल. अब आप देखो इसके पीछे कितना प्रोसेस होता है. और यहाँ पे इसने LSA सेंड किए, कुछ राउटर आईडी इतना, ये यहाँ से थोड़ा सा स्लो करो सर, काफी फास्ट चल रहे हो आप सर. फास्ट चल रहे हैं सर. कोई कहाँ पे समझने में हमारा दिक्कत भी है? लूप बैक ही नहीं कंट्रोल कनेक्ट हुआ सर, लूप बैक ही नहीं हमें मिल रहा है. लूप बैक नहीं मिल रहा आपको? कौन सा लूप बैक नहीं मिल रहा? ओके, चलो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. एक्चुअली सर हमने यहाँ पे पैरेलल लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे को जो यहाँ पे नजर आ रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा था, बट स्टिल आई गो स्लो. ओके, नो शटडाउन किया, डिबगिंग ऑन करी कि लोडिंग टू फुल वो कैसे जाता है. लोडिंग टू फुल में सबसे पहले हेलो सेंड होती है. सर, इज इट विजिबल टू यू नाउ? सर अभी आपको क्या नजर में आ रहा है? So your voice is not audible. So कुछ communicate करना चाह रहा हूँ, सुन नहीं रहा. So you are from which institute? Please come near to the mic because the mic coverage area is around 5 feet from it. क्लियर है सर. Now it's audible. Yeah sir, tell me. How you have added loop back sir? Loop back आपने कैसे ऐड किया उसका नहीं हमें पता लगा सर, क्योंकि वो लिंक आता नहीं ना एसएस डिवाइस के ऊपर जो है.
सिमुलेटर पे ओके सर, अब मैंने एडवर्टाइज सिमुलेटर के किया ऊपर सिमुलेटर के ऊपर हाउ लूपबैक इज कनेक्टेड बिटवीन R1 एंड R4. सर। लूपबैक ऐसा कनेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। लूपबैक का जो एड्रेस है वो आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ योर वो जो लिंक आ राउटिंग रहा है रेड प्रोटोकॉल। कलर का वो हमें नहीं मिल रहा. रेड कलर का लिंक नहीं मिल रहा आपको, मैं दिखाता हूँ। कर देना. ओके. स्क्रीन दिखाना सर. नेक्स्ट. नहीं तो अच्छा सर, ये जो आप इस सेट लिंक की बात कर रहे हैं जो मैंने सिलेक्ट किया, सर जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सीरियल, सीरियल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रेड लिंक मिल जाएगा. दिस इज वैन लिंक, सीरियल लिंक. ठीक है सर हमारे यहाँ है नहीं, वो सिर्फ एक ही लिंक है. सो आई डोंट नो विच जीएनएस वर्जन यू आर यूजिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं गीगाबिट भी है, एटीएम भी है, पीओएस भी है, फास्ट इथरनेट, ईथरनेट, सीरियल सारे ही हैं यहाँ पे. सिर्फ एक ही लिंक है. नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप इस पे यहाँ पे समझिए, मैं आपको जीएनएस दूसरा सेंड करता हूँ. अभी आपको ये एक प्रोसेस क्लियर हो गया. ओके, सो लेट्स मूव. देखिए मैंने राउटर नंबर 4 पे मैंने कोई भी एक्सचेंज नहीं किया, कोई भी डिबग नहीं किया था, तो इसने मुझे सीधा एक मैसेज शो किया which is this process is one, neighbor is this is nothing but your router ID of your router number 1. Okay, so on serial this from loading to full loading done. डिबग नहीं किया, डिबग के करते हैं तो यू विल फाइंड आउट कि उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है. इज इट क्लियर? So let me see the routing table here. Show IP route, and I'll hit enter. Can you see these O routes? Can you see O routes? Router number 4 has received this O route 1.1.1.1, and it says you want to reach, if you want to reach 1.1.1, you have to go via 10.1.14.1, and this is the administrative distance of your OSPF. This is the metric. Someone here asked me what is the metric of the OSPF. It is cost, and I told you cost of a serial link is 64. 64 होती है सीरियल लिंक की कॉस्ट, और डायरेक्टली कनेक्टेड दूसरा लूपबैक है तो उसमें एक और ऐड हो गया, तो कॉस्ट विल बी एट 65 here. Can you see? And these are the directly connected. Now if I want to ping 1.1.1.1, and if I hit enter, it is reachable. Can you see? It is reachable. Even it is reachable from the source of 4.4.4.4. Means पहले जो मैंने पिंग किया, जो पहला पिंग किया वो मैंने इस फिजिकल इंटरफेस से देखा कि इस फिजिकल इंटरफेस की यहाँ तक रीचेबिलिटी है. इट वर्क फाइन. नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, आप पिंग तो कीजिए, पर पिंग कैसे करेंगे? लूप बैक से पिंग कीजिए. सोर्स डाला, लूप बैक, so it reached here. It has the reaching. Look at here. Show IP interface
This is a command, you can note it down to see interface के अंदर actually में क्या है. Show IP OSPF interface at S0/0. This is S0/0. This is S0/0. इसके लिए मैंने क्या कमांड पुट किया? Show IP OSPF interface S0/0, and if I hit enter, it will say me, it will show that this is the IP address for this particular interface. It is in area 0. Its process ID is 1. Router OSPF 1 किया हमने. Router ID is 4.4.4.4. Network type is point to point. Cost is 64. उस particular interface की serial की मैंने आपको बताया cost 64 होती है. Hello timer is 10 seconds. That timer is 40 seconds. Neighbor count is 1. He is having one neighbor. With whom he is neighbor? With 1.1.1, which is your router ID of your router number 1. If I say show IP OSPF neighbors, I want to see the neighbor who will I neighbor with. Enter. The neighbor ID is this. Priority is 0. Why priority is 0? Because we don't need priority, because this is a point-to-point link. This is not OSPF over Ethernet. When we'll be configuring this, it is your OSPF over Ethernet, but this is your point-to-point. Clear हो रहा है या नहीं? State is full. Dead time is this much. ये जो dead time है आपका बार बार चेंज होता रहेगा. कभी भी ये 35 से नीचे नहीं जाएगा. वापस ये रिसेट होता रहेगा क्योंकि इसे दूसरी जगह से हेलो मिलती रहेगी. Can you see? Now let's see the hello packets जो ये सेंड कर दो. Start capturing. This is Wireshark Network Protocol Analyzer. See, inside a hello packet, what are the parameters? Network mask, hello interval 10 seconds, router priority 1, dead interval 40 seconds, backup designated router है नहीं अभी भी, active neighbor कौन सा है 4.4.4, OSPF LLS data block. This is not for you. OSPF के header में क्या होता है? Area ID is 0, backbone. Source OSPF router is 1.1 because this is on your router number 1. Can you see? Current version of OSPF which we are running is version number 2. OSPF version 2. This message type is your hello packet. Authentication is null. अगर मैं यहाँ पे कुछ authentication apply करूँगा, the authentication should be same from both the ends. Is it interesting or boring? Because एक पैकेट आपको मैं कैप्चर करके खोल कर दिखा. Otherwise, if I wanted to just complete it, सीधा command चाहते हो. Command put करी, OSPF is very simple. But this is actually उसके अंदर होता क्या है? Okay. So let me close this. Stop capturing. Now let me configure route number 2 and route number 3.
Okay. Okay. See, सर आपकी एंड से वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर, इंटरप्शन हो रहा है. please be quiet. सर आपके एंड से वॉइस नहीं आ रहा है सर. दिस इज एकेएस यूनिवर्सिटी. बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर. सर इंटरप्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटरप्शन हो रहा है सर. प्लीज बी क्वाइट. रिमोट सेंटर्स पे इंटरप्शन जा रही है, थोड़ा प्लीज. सर वॉइस नहीं आ रहा सर, बिल्कुल नहीं आ रहा है सर. सर बैंडविड्थ बहुत Is our voice clear now? कम शो कर रहा है. अभी तो सर आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है. बैंडविड्थ बहुत कमजोर जा रही है. Mics off. now AKS यूनिवर्सिटी का वीडियो आ रहा है, माइक ऑन नहीं किया. AKS यूनिवर्सिटी नॉट ऑडियो. सर यहाँ से Show this. Please. delay काफी आ रही है. चेंज कर दिया. Process ID 1. सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो रही है सर. आवाज बिल्कुल नहीं. Voice not clear. Is audio clear now? No.